सभी को नमस्कार। हम न्याय विभाग के एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न की ओर से आज के राष्ट्रीय वेबिनार संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियां में हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं, प्रतिभागियों और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा संविधान जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन 4 स्तंभों पर आधारित है। आज का ये वेबिनार बदलते सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक परिदृश्यों में इन सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। अब इस सत्र की औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव एक्सेस टू जस्टिस, न्याय विभाग से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे वेलकम एंड ओपनिंग रिमार्क प्रदान करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सभी महान सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान दिवस की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस मनाने के लिए संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियां यानी चैलेंजेस ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ही के दिन संविधान सभा द्वारा हम यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया ने संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और स्वयं को समर्पित किया था। संविधान दिवस मनाना इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया ही सॉवरेन हैं और हमने स्वयं को यह संविधान सौंपा है। यह उन सभी विभूतियों की दूरदर्शिता को दर्शाता है जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया और करोड़ों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति समान रूप से सचेत रहे। भारत का संविधान हमारे देश के लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को मूर्त रूप देता है, जिसका उल्लेख संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये संवैधानिक मूल्यों का एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रगति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। हालांकि बदलते सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य और तेजी से हो रहे तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय परिवर्तनों ने इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए नई चुनौतियां भी पेश की हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, डाटा प्राइवेसी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे क्षेत्रों में उभरते मुद्दे संवैधानिक नैतिकता और कानून के शासन के कॉन्टेक्स्ट में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। आज का वेबिनार्स की श्रृंखला में न्याय विभाग द्वारा आयोजित 24वां वेबिनार है। आज के वेबिनार के लिए चुना गया विषय चैलेंजेस ऑफ अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। यह वेबिनार विद्वानों, विधिवेताओं, नीति निर्माताओं और नागरिकों के बीच संवैधानिक आदर्शों की निरंतर प्रासंगिकता पर विचार करने और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने के तरीकों की खोज करने हेतु संवाद को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। मैं गांवों में सभी जन सेवा केंद्रों CSC के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो देश में सभी के लिए न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी, विभिन्न ग्राम पंचायतों, कानूनी सलाह और अदालत में प्रतिनिधित्व चाहने वाले लाभार्थियों, निःशुल्क अधिवक्ताओं, न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत निःशुल्क सहयोगियों, विधि महाविद्यालयों और दिशा स्कीम के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के तहत अन्य कार्यान्वयन भागीदारों को जोड़ते हैं।
क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज, न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस का सार्थक आधार बनाती है। इसकी प्रभावशीलता समान अवसर प्रदान करके इसे सुलभ बनाने और हर उस नागरिक को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने में निहित है जो गरीबी, दरिद्रता या संचार की कमी के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते और कानूनों और प्रक्रियाओं के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे समझना उनके लिए बहुत कठिन होता है। हमने देखा था कोविड महामारी ने हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी की थी। हमें लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए नवीन तकनीकी समाधानों की तलाश करने पर मजबूर किया था। जूम, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, वीसी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिस आदि प्लेटफॉर्म का गोपनीयता सुनिश्चित करने, सूचना प्रवाह पर नियंत्रण और ऑनलाइन मीटिंग सह चर्चा कक्ष में प्रतिभागियों के प्रवेश के लिए प्रयोग किया गया। सरकारी, निजी क्षेत्र और यहाँ तक कि कानूनी स्टार्टअप भी देश में विभिन्न सामाजिक, स्वास्थ्य, कानूनी और आर्थिक विकास के बारे में नागरिकों को सूचित रखने के लिए चर्चा मंच बनाने का प्रयोग करते रहे हैं। न्याय विभाग ने कानूनी साक्षरता, कानूनी ज्ञान और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, हकों, विभिन्न मंत्रालयों की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषज्ञों की राय और वैकल्पिक एवं न्यायिक प्रकृति के शिकायत निवारण तंत्र पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कानूनी प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों पर मासिक वेबिनार भी शुरू किए हैं। न्याय को सुलभ, निरंतर और नवीन रूप से उपलब्ध कराने में योगदान देना समय की मांग है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों में अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति सामूहिक चेतना जागृत करनी होगी, जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और नागरिकों को विधिक सेवाओं की कुशल प्रदायगी हेतु समाधानों का मार्ग प्रशस्त करेगी। संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियों का उद्देश्य संविधान में मौजूद अंतर्निहित मूल्यों, संविधान की परिवर्तनकारी भूमिका, संविधान और भारत के लोगों के बीच सहजीवी भूमिका को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना है। हम श्रोताओं को इस तरह की मासिक वेबिनार श्रृंखला को अधिक शिक्षाप्रद और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए अपने विचार शेयर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आमंत्रित करते हैं। इसके लिए वे टेलीलॉ हेल्पलाइन 14454 पर कॉल करें या हमारा एक ईमेल है kailash.kr@nic.in पर लिखें। अधिक समय न लेते हुए आइए हम वेबिनार के लिए विशेषज्ञों की बात सुनें और अपने प्रतिभागियों के प्रश्न और उनके उत्तर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for those insightful opening remarks. अब हम आज के पहले वक्ता का स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, डॉक्टर मनोज कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर थॉट्स ऑन द थीम। सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? Yes, sir, we can hear you, sir. Thank you. Well, good afternoon, everyone. My colleague from the Ministry of Law and Justice, Department of Justice, Shri Suresh Kumar ji, Professor Meena Panikar from Delhi University, Professor P. Puneet from Center for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, colleagues from the Ministry of Law and Justice and other departments, colleagues from the legal fraternity, and distinguished participants who have joined virtually today. It is an honor to join you for the commemoration of the 76th Constitution Day
in particular through this webinar focusing on challenges of upholding constitutional principles. Friends, there are few subjects as foundational and as deeply connected to India's journey as a constitutional democracy. The Constitution of India is not merely a statute, it is a moral compass, our collective promise, and our charter of national transformation. It captures India's transition from colonial rule to people's rule, from arbitrary authority to democratic accountability, and from being mere subjects under a regime to a citizens in republic. Friends, we are living through one of the most transformative phases in India's history since our independence. Technology is reshaping how we work, how we are governed, and how we communicate like never before. Governance structures are being tested by complex cross-border challenges. Citizens expect justice, transparency, and efficiency like never before. And we in India have set it a target for ourselves, an ambitious national milestone to achieve a Viksit Bharat by 2047. In these times, in such times, constitutional principles are not merely historical reference points. Just hold on. I'm in a webinar. I'm in a webinar. हाँ बोलिए. हाँ, just hold on for a minute, please. Well, my regrets for the pause. There was some very pressing engagement. We'll continue from where we paused for this moment. So I was saying in such times, constitutional principles are not merely historical reference points to reflect on what has happened over the last 75 or 76 years. They serve as anchors of stability, guardrails for institutions, instruments of inclusion, and ethical foundation of development. Without constitutional discipline, rapid change may lead to disorder. Without constitutional morality, power may lose direction. And without constitutional guarantees, development may become uneven or exclusionary. Thus, examining the challenges
of upholding constitutional principles may guide us on the way forward to shaping India's destiny over the next 25 years. Before addressing or reflecting upon some of the challenges, let us remind ourselves of the constitutional pillars that define our republic. The first being constitutional supremacy. Constitution is the supreme law. It defines the limits of power and ensures that no authority, however high, can place itself above the law. Then we have rule of law. Laws must be clear, predictable, fair, and equally applicable. The rule of law protects individual liberty and ensures that governance is based on reason, not arbitrariness. We then have separation of powers under the Constitution and the institutional balance. The legislature, executive, and judiciary are equal pillars. Each must work independently but collaboratively with mutual respect for constitutional boundaries. We then have one of the most important pillars of a constitution, protection of fundamental rights and social justice. The constitution guarantees liberty, dignity, equality, and protection from discrimination. It directs the state to create opportunities and remove barriers so that justice becomes a lived reality. These principles, my friends, are not theoretical. They are living commitments meant to guide every decision we take, every institution under the Constitution, and for the benefit of every citizen. Let us now examine some of the challenges which we may need to navigate on our journey to a Viksit Bharat at 2047. The challenges we are going to discuss now are essentially revolving around law and justice. First of the challenges being ensuring rule of law in a rapidly changing society. Today's society is changing faster than the speed at which the law can cope up or law can keep pace with. Some illustrations on this: artificial intelligence transforming decision making, cross-border data flows challenging jurisdiction, new forms of financial crime and digital fraud, dynamic economic models emerging in fintech, gig work, and e-commerce, and rapidly shifting social behavior. The rule of law requires that laws evolve without compromising fairness or constitutional morality. A modern justice system must therefore be anticipatory, technology aware, responsive, and grounded in due process. We then have the issue of protecting fundamental rights in the digital age. The digital era has expanded freedoms but also exposed citizens to multiple vulnerabilities. Let's look at some of them. Citizens in today's age are exposed to privacy violations. They're exposed to pervasive data collection. They're exposed to algorithm bias. They're exposed to online misinformation. They're exposed to digital exclusion and emerging surveillance technologies. All these challenges need to be reconciled on how a balance can be achieved in ensuring that the citizens' rights promised under the Constitution are not at stake and are safeguarded. Fundamental rights of privacy, equality, free speech, and dignity must be reinterpreted for a world where technology mediates everyday life. We must strike the right balance between liberty and security, innovation and accountability, free expression and responsible digital behavior.
Let's move on to the next issue, bridging social and economic inequalities. The Constitution promises social, economic, and political justice. Inequalities in various areas need continued focus to be dealt with. Access to quality education, access to courts and legal aid, access to healthcare, gender equality, digital connectivity, and economic opportunities. Development and justice are not separate, they reinforce each other. The next issue is very close to an area of work which we collectively handle: speedy and affordable access to justice. Delayed justice weakens faith in the Constitution. A lot of work has been done in this regard, but some barriers which may still need to be focused on to achieve the right objectives are as follows. Overburdened courts need to be dealt with. Uneven distribution of judges, either because of workload or geographical distribution or on various parameters, may need continued focus. Need to unroll complex procedures. A lot of work has already been done in the last 11 years in terms of simplification of laws, deletion of obsolete laws, and of course, altogether removal or reduction of penal consequences on minor offences. But a lot more needs to be done on a continuous basis on our way to a Viksit Bharat. Economic barriers to litigation need to be bridged. For a common person, in many scenarios, litigation is very expensive. So it should not be that a common person has to settle for a definition of justice which is not justice according to them, purely because of or merely because of cost of litigation. Therefore, economic barriers to litigation need to be bridged. Geographical barriers for rural citizens to have equal access to justice as much as a citizen who is differently placed in a better geography. The judiciary has in the past made remarkable progress through their various initiatives and contributions. These include virtual courts, hybrid hearings, e-filing, e-payments, cause list digitization, translation of orders, and pilot projects for online dispute resolution. Needless to say, the Ministry of Law and Justice and its various departments have been supporting and standing up to the occasion at every stage. But the journey is ongoing. Access to justice must be fast, fair, and affordable for every citizen. The next issue is again very crucial: constitutional literacy among citizens. A citizen is only as strong as the level of understanding the citizen has of his or her constitutional rights, remedies, and obligations. Similarly, a constitution is only as strong as the people who understand it. Yet, constitutional literacy remains to reach the last person in every corner of our country. Many citizens at times are unaware of the rights, their duties, the functions of various institutions under the Constitution, or constitutional remedies available to them when they need it. A democratic republic needs a constitutionally informed citizen who participates responsibly and holds institutions accountable. To close, I want to close by saying a constitution survives not by its words, but by the will of the people to defend their words. Upholding constitutional principles is not the duty of any one institution. It is the collective responsibility of the Republic. As India marches towards Viksit Bharat at 2047, as we build a future rooted in justice, dignity,
and opportunity to all, let us reaffirm our commitment to the Constitution as our guiding light. The Constitution is not just our inheritance, it is our responsibility, our identity, and our roadmap to a just and developed India. With these words, I thank the Department of Justice for having me here today to share my views. All the best for the deliberations and wish you a very happy and successful 76th Constitution Day. Thank you. धन्यवाद सर आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए। अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर मीना पानीकर, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज उनका विषय है द एसिमेट्रिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। मैम, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर योर इनसाइट्स प्लीज। थैंक यू ऑल। मुझे ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट मिला था कि बाइलिंगुअल कर दो, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश करूँगी। मैं एक टॉपिक के ऊपर बोलना चाहती हूँ, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल मानते हैं, वो है फेडरलिज्म। पता नहीं है आप में कितने लोग उसके ऊपर इतना सीरियसली बात करते हैं। ज़्यादातर लॉ में है, पॉलिटिकल साइंस में है, काफ़ी डिस्कशंस होते रहते हैं, और आजकल शायद पिछले 3-4 साल से ज़्यादा डिस्कशन हो गया, particularly because of the abrogation of Article 370 कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। मैं उस इशू में नहीं जा रही हूँ, लेकिन असिमेट्रिक फेडरलिज्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा एनलाइटन किया सबको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक मतलब वो एक लेवल पर सारे स्टेट्स को, टेरिटरीज को ट्रीट नहीं करते। असिमेट्री, अनइवननेस है, तो इनइक्वालिटी लग सकता है। कुछ स्टेट्स को ज़्यादा दे रहे, कुछ को सेपरेटली प्रोविजंस बनाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो असिमेट्रिक कैरेक्टर वो शुरुआत से है। वो नॉट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 370, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी जगह पर आप ये देख सकते हैं। ये एक और डायमेंशन इसका ये है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो एक फेडरल मॉडल के लिए क्यों कोशिश किया। एक तो है कि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, डाइवर्स कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सारे कुछ इतना डाइवर्सिटी है, प्लूरालिटी है। इसकी वजह से हमें एक मॉडल विच वुड वर्क बेटर फॉर इंडिया वाज अ फेडरल मॉडल, कि हम एक सेंटर में गवर्नमेंट होगा, स्टेट में गवर्नमेंट होगा, आपस में पावर शेयरिंग करेंगे। लेकिन ये पावर शेयरिंग का इक्वेशन क्या हो सकता है, उसमें कंसर्न्स था। लेकिन क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे पास ब्रिटिश डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, काफ़ी टेरिटरीज थे विच वर अंडर डिफरेंट colonial rulers. For instance, if you look at Portugal, French rulers in different smaller portions of India, ये सब मिलजुल कर इंडिया होते थे। तो इसमें इंटीग्रेट करके, यूनाइट करके लेकर आना एक बड़ा टास्क था। एक बढ़िया क्रेडिट गोज टू सरदार पटेल एंड हिज टीम कि वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो इंटीग्रेशन में हमें काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स वर्कआउट करना पड़ा। तो इंडिया शुरू किया इनका इंडिपेंडेंट जर्नी। देयर वर 4 काइंड्स ऑफ टेरिटरीज, ABCD। आप अभी देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर डिस्कशन अबाउट स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, फिर कुछ और टेरिटरीज वो इंडिया के पास है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो बाई एंड लार्ज हम देखते हैं 2 तरह के टेरिटरीज, वो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है। वो स्टेट्स में भी हमने कुछ स्टेट्स के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस कर दिया है।
तो 2 शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, 5th और 6th शेड्यूल बोलते हैं। तो 5th शेड्यूल में है जितने भी शेड्यूल्ड एरिया से, ट्राइबल एरिया से, सारे देश का, उसको 5th शेड्यूल में इंक्लूड किया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किया है। और 6th शेड्यूल में है 4 स्टेट्स है, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वो उनके लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाया है, गवर्नर के साथ मिलकर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाया है। वो एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत से अपने आप बनाया है। फिर ओवर द इयर्स हमने काफ़ी कुछ टेरिटरीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर देखोगे, आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, तो उसके मेंशन में नहीं कर रही हूँ। 371 से लेकर 371 कैपिटल जे तक आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए मिलेगा, कर्नाटका हैदराबाद रीजियन के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए मिलेगा। और भी सजेशंस आ रहे हैं, एक प्रपोज्ड वाला स्टिल पेंडिंग है, वो 371 के है। सिमिलर मॉडल्स ऑल्सो मे बी देयर इन फ्यूचर। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 10 और 11 टेरिटरीज के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी किया है। अभी कौन कौन से एरिया में ये स्पेशल अरेंजमेंट होगा? एजुकेशन में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, इवन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में है, सिविल क्रिमिनल जस्टिस, जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज में सम स्टेट्स में अपना कस्टमरी लॉस के बेसिस पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है ये प्रोविजंस में। तो कितना वास्ट डाइवर्सिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि हम फेडरलिज्म बोलते हैं टू सिंपली से दैट इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हो सकता है, लॉ मेकिंग पावर्स हो सकता है, डिवीजन सब कर दिया है। लेकिन अंदर अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, आप देखते हैं कि वो स्पेशल अरेंजमेंट्स काफ़ी कुछ बनाया है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 बार सोचना पड़ता है कि अगर एक लॉ लेकर आ रहे, वो किस टेरिटरी में कैसे काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस पर भी देखकर करना पड़ता है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस आया था कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में शेड्यूल्ड एरियाज में कुछ एरियाज में वो वीमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे इलेक्शंस में। तो वीमेन कंटेस्ट नहीं करते, इलेक्शन में लड़ नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट था कि वो हमारे कस्टम में ये परमिटेड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कस्टम इज रिकग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उनका इज्जत देते हैं, लेकिन उसमें वो कस्टम अगर हमारे जनरल लॉ वो जेंडर जस्टिस को मानते हैं, वीमेन के इक्वालिटी को मानते हैं, तो उसके फेवर में ही कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट विल अलाउ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। तो ऐसे ऐसे केसेस चुन चुन के आ रहे 5th 6th शेड्यूल्स में। कितने वो एक प्रोसेस, जैसे पिछले स्पीकर ने बोला, एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अडॉप्ट किया, वहाँ एंड हो गया, अभी वो टेक्स्ट के बेसिस पर हम देश को चलाएंगे। नहीं, देश चलाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंजेस आते रहते हैं और आते रहते हैं। वो डिपेंड्स अपॉन कितने आपके देश के लोग सोचते हैं अपने राइट्स के ऊपर, उनको कितना एजुकेशन मिलता है, कितने एम्पावरमेंट मिलता है। आपके मिनिस्ट्रीज, काफ़ी मिनिस्ट्री लगे जाते हैं कि लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। हम जस्टिस को यूजुअली बोलते हैं जस्टिस कोर्ट रूम का जस्टिस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। कोर्ट है, जजेस है, लॉयर्स है, वो है प्रैक्टिशनर्स ऑफ लॉ। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर दिन कितने फाइल प्रोसेस करते हैं, वो भी एक प्रैक्टिशनर है, वो हम इतने ध्यान से देखते नहीं हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने डीपली आप देखोगे उतने डीपली आपको चैलेंजेस भी मिलते रहेंगे।
कोर्ट्स ने काफ़ी कुछ ये स्पेशल अरेंजमेंट्स फेडरलिज्म का किया है, उसको रेस्पेक्ट करके चल रहे, लेकिन कुछ इश्यूज में जैसे जेंडर जस्टिस है उसमें वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कस्टमरी लॉ भी इवेंचुअली हैव टू बी इन लाइन विथ वीमेंस इक्वालिटी, तो उसके लिए कोर्ट इतना सपोर्ट नहीं दिया है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट, अब अगर हम फेडरलिज्म बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर्स बोलते हैं, तो हमारे पास टेरिटरीज है जिनका रिक्वायरमेंट्स अलग है, डेवलपमेंट स्टेज अलग है, जिनके कम्युनिटी का प्रेफरेंसेस अलग है। ये सब सोचकर हमने काफ़ी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स वर्कआउट किया है, लेकिन इसको भी देश के गवर्नेंस में पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक आप देखते हैं इलेक्शन में भी हमें अलग अलग टेरिटरी से अलग अलग नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कुछ टेरिटरी से ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, कुछ टेरिटरी से हमें मिलेगा 30 होगा, 50 होगा, 80 होगा, तो एक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो भी पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स डिफरेंट है डिफरेंट टेरिटरीज के लिए। फिर हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है। अगर आप दिल्ली का केस देखो और पुदुचेरी का देखो, ये एक हाइब्रिड मॉडल है कि उनके कुछ फीचर्स स्टेट्स के साथ जाते हैं, कुछ फीचर्स स्टेट्स के साथ यूनियन टेरिटरी का। दिल्ली देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज सेंट्रली अपॉइंटेड, लेकिन उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा है। नाउ दिल्ली के केस में all these special arrangements are through constitutional amendments, तो उसमें भी आप डेमोक्रेसी देखोगे कि अगर 1 मिनट के लिए हम मानते हैं कि ये भी कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हुआ है, काफ़ी मूवमेंट्स चला है, तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए किया है, कुछ केसेस में हो सकता है। दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वे स्पेसिफिक था कि दिल्ली को अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट्स ऐसा है कि वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में नहीं है। एक है दिल्ली पुलिस, दूसरा है लैंड, तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। ये तीनों पार्लियामेंट के पावर में है। तो देखो कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे कि इसलिए गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज नॉट एन ईजी टास्क, एंड ये फ्यूचर में भी आपको चैलेंजेस दे देंगे, क्योंकि हर एक टेरिटरीज का स्टेटस कैन बी चेंज्ड। अ स्टेट, a union territory for long number of years then assumes the character of a state with a legislative assembly. Some states may be converted into a union territory. There are multiple reasons for it. So what I wanted to say is that federalism is a principle, but don't try to see it only as a sharing of power in between the center and the states. Now, all the more you can see an area where these special arrangements also are special and different with respect to the financial resources allocation. अलग अलग parts के लिए अलग अलग arrangements दिया है, but then you can also see something which is not clearly within the field of law, लेकिन politics, because it all depends on the performance of the political parties, the stability within the system of governance, the growth of power of regional parties. All these will give scope for bargaining with the center. लेकिन मैं बोलती हूँ कि ये asymmetry is essential for keeping up the diversity of the country, for keeping up its plurality, but it should not hamper the development of the country. So whatever is needed for the development, because we all like to have our own people coming up in terms of education, in terms of accessing public services, employment opportunities, entrepreneurship for themselves, all these are necessary. लेकिन asymmetry वो फेडरेशन में होता है to
It brings together different territories, लेकिन इसको होल्ड करके आगे लेकर जाना भी एक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क है. मैं इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि the more I look at the constitution, I can see too many complexities, and much of the complexities we never discuss in classes. क्योंकि अगर आप देखोगे 371 से शुरू करके 371 के बाद कैपिटल ए से शुरू करके कैपिटल जे तक हमने अभी तक इंक्लूड किया है. That means we have made special arrangements for more than 10 states or territories. यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स लेकर आ गया है. ऑल यूनियन टेरिटरीज आर नॉट यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. सो इतना कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम में हम काम कर रहे हैं और वो हमें ज़रूरी है बिकॉज एक फेडरल सिस्टम में आपको ये डाइवर्सिटी और प्लूरलिटी डे टू डे बेसिस पर फेस करना पड़ता है. हाउ बेटर यू कैन मैनेज डिपेंड अपॉन द लीडरशिप, the political situation of the country, the kind of stability in governments across India, all these are decisive factors. Thank you. थैंक यू मैम. अब हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर पी पुनीत, प्रोफेसर ऑफ लॉ, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज. सर के पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉज के इंटरफेस पर 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है. आपका एकेडमिक कार्य सामाजिक न्याय और संवैधानिक शासन पर विशेष रूप से केंद्रित रहा है. आज प्रोफेसर पुनीत सर का विषय है सिक्योरिंग सोशल जस्टिस एंड अनफुलफिल्ड एजेंडा of the Indian Constitution. Sir, we request you to kindly share your thoughts. Thank you very much and very good afternoon to all of you. Before beginning, I must express my inability to speak in Hindi. Though I understand Hindi, my Hindi is not good enough to be spoken in a small formal conversations like this. So my sincere apologies for that. Let me begin by wishing you all a very happy Constitution Day. In my opinion, every passing year presents us with an opportunity to look back and assess the progress we have so far made in accomplishing our constitutional goals and to understand the challenges in making further progress in realizing those goals. So at the outset, let me thank Mr. Suresh Kumar ji, Honorable Joint Secretary, and Mr. SSV Kumar ji, the Director, for providing me this opportunity to share some of my thoughts on the theme challenges of upholding constitutional principles. The Constitution of India is not a contrivance for merely establishing institutions, vesting in them powers and laying down processes for governance of the country. It was a much larger and highly ambitious project. It is profoundly transformative in character. It seeks to thoroughly reconstruct not just the polity, but also the Indian society and its economy. Its larger goal was to establish a democratic and equitable society while also assuring national unity and integrity. It sought to achieve several goals simultaneously. It is indisputably an ambitious project. It embodies a grand transformative vision. How much progress we have made in the last over 7 decades, precisely 76 years, in achieving each of these goals envisaged in our Constitution is difficult to encapsulate. In this brief talk, let me focus only on one of the important goals of our Constitution, that is securing social justice to all its citizens, as envisaged in the preamble of our Constitution. Securing social justice is in fact one of the prominent features of the transformative vision embodied in the Constitution, though the word socialist came to be inserted much later into the preamble. Securing social justice to all the citizens was very much part of the original constitutional scheme. There was never a doubt that many features of the Indian Constitution were premised on the bedrock of socialism. As Granville Austin says, since most of the members of the Constituent Assembly had a socialist commitment, they laid emphasis on securing social justice. In the formative years, since the framers had a strong socialist commitment,
securing social justice was also high on the agenda of political establishment, the policymakers. They initiated several reforms for advancing it. The very first amendment to the Constitution was hurriedly made, among other things, to address certain incompatibilities and clear the hurdles in the process of implementation of social justice goals. Securing social justice remained as one of the priorities of the political establishment till at least the mid-1970s. Several other amendments were made to the Constitution to advance it. The 4th Amendment, 17th, 25th, 29th, 34th, 40th, 42nd, 44th. All these amendments were made to clear the way for implementation of social justice agenda of the Constitution. Priorities of the political establishment changed later. In the post-emergency era, the policy makers quietly deflected from the path of securing social justice and started relentlessly pursuing the policy of liberalization, globalization, and privatization. This shift became more pronounced in the early 1990s, with India adopting the new economic policy and opened up its economy. Relentless pursuit of the new economic policy not only resulted in shifting the focus away from social justice, it has also significantly dented the state's redistributionist capacity, which is very much important for implementing the socialist agenda of the Indian Constitution. In the post-liberalization era, states' pursuit of social justice was confined only to reservations and certain other welfare measures. Some of the core aspects were completely forgotten. After the political establishment retreated from the socialist agenda, the judiciary has shown some keenness in pushing forward the socialist agenda, but there are institutional limitations on the judiciary. It cannot go beyond a point to push for the implementation of the socialist agenda in its entirety. But at the same time, the apex court is not consistent in pushing forward the socialist agenda to whatever extent it was possible for them. For example, in Delhi Science Forum's case, as well as in Balco Employees Association case, the apex court has not given much credence to the socialist agenda of the Indian Constitution. In one of the cases, State of Punjab versus Devans Modern Breweries Limited, Justice S.B. Sinha, in his separate opinion, even acknowledged that from the early 90s, that is ever since the new economic policy was adopted, he says, this view that the Indian society is essentially wedded to socialism is definitely withering away. Recent decisions of the Supreme Court is even more concerning. In Dr. Balram Singh versus Union of India, while dismissing the petition challenging, among other things, the insertion of the word socialist into the preamble, a two-judge bench remarked that the socialism in the context of the Indian Constitution means state's commitment to be a welfare state and its commitment to ensuring equality of opportunity. It also opined that the Constitution of India does not mandate a specific economic policy or a structure. It is the broader context in which we are talking about social justice in the contemporary era. I understand the paucity of time. I will only make 3 quick points. My first point is that under the scheme of the Indian Constitution, socialism is meant to be much more than a mere commitment to be a welfare state. The concept has rich contents that are to be derived from different operative provisions, both in Part 3 and Part 4 of the Constitution of India. The recent decision of the Supreme Court has denuded the concept much of its contents. Firstly, was the two-judge bench right in holding that the Constitution of India does not mandate a specific economic policy or a structure? In my opinion, the answer is no. Socialism is basically an economic philosophy. The Constitution, which embodies socialist principles, cannot be said to not have mandated a specific economic policy or a theory. Economic policy framed for governing the operation of the economy must be informed by the social justice principles embodied in the Constitution. Just because they are judicially non-enforceable, their significance cannot be undermined. Secondly, its observation that the socialism in the context of the Indian Constitution means only states' commitment to be a welfare state and its commitment to ensuring equality of opportunity is not acceptable. The bench seems to have collapsed the entire idea of socialism under the Indian Constitution into 2 things. One, reservation, and another, welfare schemes. Socialism is meant to be much more than that.
we should not, of course, understand its true essence based on some a priori theory. In the context of the Indian Constitution, its true essence should be derived from different operative provisions in Part 3 and 4. And socialism under the Indian Constitution, if you so construe, has at least the following five main elements. One, abolition of inhuman and discriminatory practices which are entrenched in our society. Such practices have led to exclusion of certain sections from the mainstream of socio-political and economic life. Two, it requires the state to pursue protective discrimination policies for securing equality in an unequal society. Our Constitution permits every process of equalization. This is what even the Supreme Court has said in some of the cases. The reservation in education and employment are just parts of it. The state is empowered to do much more than that. Three, reducing inequalities in income not only amongst individuals but also amongst groups of people. Four, equitable distribution of material resources of the community. Fifth, prevention of concentration of wealth and means of production. Socialism under the Indian Constitution is thus much more than mere commitment to a welfare state. A welfare state only focuses on health and well-being of citizens, especially those in financial or social needs, by means of grants, pensions, or other benefits. At best, it may ensure minimum standard of living, but not equality in status, facilities, and opportunities, nor in income and wealth as mandated under the Constitution. My second important point is the political establishment retreat from the path of social justice in the post-emergency era has led to exacerbation of existing inequalities to the alarming level. Reducing inequalities in income and preventing concentration of wealth are the constitutional mandates under Article 38 and Article 39 respectively. They are part of the socialist agenda of the Indian Constitution. What progress we have made in the last 75 years in this direction? We have actually not made any progress in achieving these goals. Data reveals that inequalities in income and wealth are actually increasing since 1980s. That is, ever since the state started retreating from the socialist agenda. In a recent paper published by the World Inequality Lab, authored by Nitin Kumar Bharti and Thomas Piketty, points out, income share of top 10% of Indians was 40% at the turn of independence, which was reduced to 30% by 1982. But by 2022, it was increased close to 60%. It's more than what it was during the independence. And as far as the bottom 50% of the Indians are concerned, they had the income share of 22.4% in 1990, which was decreased to 15% in 2022. It clearly shows that inequalities in income have actually increased over a period of time. The rich are growing richer and the poor are becoming poorer. We are moving in an opposite direction to the one mandated by the Constitution. Even as regards wealth, there is an extreme concentration at the top, at the very top. Between 1961 to 2023, the wealth share of top 1% Indians has seen threefold increase from 13% in 61 to 39% in 2023. In the same period, between 1961 and 2023, the wealth share of the top 10% Indians has increased from 45% to 65%. And as far as the bottom 50 of Indians are concerned, between 61 and 2023, their wealth share decreased from 11% to 6.4%. While India is one of the greatest growing economies in the world, what is troubling is that it is also one of the most unequal countries in the world. We seem to be governing our country on an anti-utilitarian principles. That's probably misery for many and prosperity for few. The results are there to see. Inequalities are increasing very sharply. What is particularly worrying in India, I am going to end. Case is that the economic inequality is being added to the society that is already fractured along the lines of caste, religion, region, and gender. The last point that I would like to make is that in order to counteract the possible consequence of increasing inequalities, it is necessary to bring back the socialist social justice agenda back on track. And it is important for us as a country at this juncture to pause and think as to where we are heading.
B.R. Ambedkar has already warned us about the dangers of overlooking social and economic inequalities. And in his last speech that he has delivered on November 25th, 1949, he in fact said we cannot live this life of contradiction where on the one hand we have equality in the political life and inequalities in socio and economic life. He said, how long shall we continue to deny inequality in our social and economic life? We cannot afford to go on like this for long, otherwise there is a great danger. I think we need to take seriously his cautious words. In order to avoid such danger, the country must move in the direction mandated by the Constitution. We need to pay adequate attention towards the growing gaps between the rich and the poor. Steps shall be taken not only to arrest the growing gaps, but also to reverse the trend. Justice Sudhanshu Dhulia, in his recent judgment in the Property Owners Association versus State of Maharashtra 2024 decision, while underscoring the importance of Article 38 and 39 B and C in the contemporary time, said, perhaps in some ways situations have changed. What has not changed, however, is the inequality. There is today a political equality and there is also equality in law, yet the social and economic inequalities continue. The inequality in income and wealth and the growing gap between the rich and the poor is still enormous. It will therefore not be prudent to abandon the principles on which Article 38 and 39 are based. Even at the international level, its importance is underscored by the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. Even the UNO acknowledges its importance. It celebrates since 2009, February 20th as the World Day of Social Justice. It is a recognition of the growing momentum for the concept that advancing social justice should be the central aim guiding all national and international policies. It is time that we in India should bring it back on the agenda. Thank you very much. Thank you very much, Professor Puneet sir, for sharing such valuable insights. अब हम वेबिनार के ओपन डिस्कशंस क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स द्वारा भेजे गए प्रश्नों को हम एक एक कर लेंगे और संबंधित वक्ताओं से प्रतिक्रिया का अनुरोध करेंगे। पहला सवाल है, वर्तमान परिदृश्य में संवैधानिक सिद्धांतों के संरक्षण में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? What are the major challenges in implementing and safeguarding constitutional principle in the present context? Whom do you want to? Anybody can respond. Dr. Manoj is next. I think probably our first speaker has touched upon this very issue and highlighted what are the major challenges in achieving the constitutional goals. That by and large, if you look at that we are moving in the direction that is mandated under the Constitution. There are institutions that are in place. There are processes that the Constitution mandates either explicitly or implicitly that needs to be followed. One of the most important thing that we should as a country be focusing on is about ensuring the independence of each of these constitutional institutions and ensuring the integrity of the processes that are envisaged in the Constitution, so that our democracy would be largely benefited from these independent institutions. It is generally also said that to ensure the accountability of the political class, dependence on people is must. There is a periodic elections that are envisaged. That is a must, but that alone is not sufficient. What James Madison says, the history has taught the mankind that in addition to that, we need auxiliary measures. And these auxiliary measures, Indian Constitution envisages far too many of them by creating several independent institutions to be watchdogs, to monitor, and it is important that we maintain those institutions' independence and ensure the integrity of processes largely. That's the major thing that we should be concerned with at present. Okay, second question, thank you sir. Second question है, cooperative federalism को और मजबूत बनाने के लिए किन व्यवहारिक कदमों की आवश्यकता है? What practical steps are needed to strengthen cooperative federalism in India?
By and large, I think because these expressions are used, competitive federalism, cooperative federalism, and less spoken about is the asymmetrical federalism. That is exactly the reason I took it up, because we speak about competitive or cooperative and more tune ourselves into the way of cooperative federalism, because the center and the states have to work together for the growth of the country. That is the very fundamental basis of federalism. But then, so what is more required, I would say that how can you increase the quality of cooperation? That will decide on whether your cooperative federalism is on track or not. But then at the same time, let us remind ourselves that the units of Indian federal setup are not equal. It is not simply about a principle of equality, because we are so diverse, we are so different from each other in certain regions. They are geographically so remote. Accessibility, we sitting in Delhi, we speak about technology. There are still areas in India where the internet accessibility is not so easily available. So I would say that, you know, the remote corners of the country also needs to be brought up with the mainstream areas, for which that asymmetrical arrangement has been worked out in the constitution, which should be given due respect to. And therefore cooperative federalism is not only about me gaining what is my due share. It's after all a bargaining, but then we also should think about the less privileged ones among ourselves. They are also entitled to get the constitutional benefits of a federal setup. Thank you. थैंक यू मैम। हम आज के सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं आदरणीय श्री यशस्वी कुमार, डायरेक्टर एक्सेस टू जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे औपचारिक वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। Thank you, Asif. Before I deliver my vote of thanks, I would like to sum up the some of the important points which were touched by the speakers. As emphasized by the first speaker, Dr. Manoj Kumar, that we are moving through a very transformative phase. The post-independence, this is one of the most transformative phases through which the country is moving. There are various kinds of challenges, including technological challenges, cross-border challenges, and expectations of the citizens are also hovering a heavy hand on the government. And these are some of the challenges through which we are moving, and the government is giving its best. And over the last 10, 11 years, he illustrated how we have, as judiciary has also rose up to the occasion, including the various departments, in fulfilling the dreams of Viksit Bharat. It's a nation in the making. We are still, moving towards that goal. So it's a long drawn process, and still, we have a long way to go. Similarly, Professor Meena Panikkar ma'am also emphasized upon the importance of, federalism. Federalism is a model which was chosen because of the compulsions of a diverse country like India, where there was no uniformity. We are plural right from the word, day one of the independence, and even before that. So for that, it was out of choice that this model was adopted, and there are various provisions in the Constitution, how it was highlighted, various schedules in the Constitution which, give that kind of a freedom to the government, and to take various measures, with respect to various states and UTs, and over a period of time. It is not just about Article 370, it is about other northeastern states, other southern states also, where various kind of steps have been taken by the government to take care of the feelings and the political compulsions on the ground. Similarly, the third speaker, Professor Puneet, also highlighted the importance of socialism. It cannot be merely a lip service. It cannot be just confined to mere reservations and one or two welfare measures. It has to be taken as a holistic agenda for the government. I think these are all very important thought points, thought processes which we all need to inculcate. And I think all the institutions in the government are very much geared to that journey, those goals. And with that thought process, I would like to thank my JS, Suresh sir, for his constant support and guidance for organizing this webinar, and my three speakers, Dr. Manoj Kumar, Dr.
P. Puneet sir and Meena Panikar ma'am for giving their valuable time and giving us full support in organizing this webinar. My full support thanks to my team led by Shri Narendra Kumar, my Under Secretary, and the admin, without whom and DS admin also ma'am for constant support in organizing this whole thing, right from the making arrangements for the standees to the support system right in the morning for the webinar and for the pledge. So thank you for all, and the audience also for being a patient listener and understanding. And I would also like to thank all the CSC people who have helped us connect to the pan India audience today for this important occasion. Thank you and happy Constitution Day to all. अब हम आज के सभी सम्मानित वक्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आदरणीय श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव एक्सेस टू जस्टिस न्याय विभाग से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे आज के तीनों प्रमुख वक्ताओं को उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में शील्ड प्रदान करें। चूंकि डॉक्टर मनोज कुमार सर आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, अतः उनका टोकन ऑफ एप्रिसिएशन न्याय विभाग द्वारा ससम्मान उनके कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मीना पानिकर मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया मंच पर आकर आएं और टोकन एप्रिसिएशन ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर पी पुनीत, प्रोफेसर ऑफ लॉ को आमंत्रित करता हूं कि अपना टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ग्रहण करें। इसके साथ ही आज का राष्ट्रीय वेबिनार संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियां यहीं संपन्न होती है। हम सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल ए मीनिंगफुल कॉन्स्टिट्यूशन डे। थैंक यू अगेन।